Hello students, I welcome you to this video on Maharashtra MBA CET 2026. In this video, I'm going to talk about everything that you should be knowing at this point in time. And let's start with the date. So as per the recent notification on the CET Cell website, they have released the tentative dates for Maharashtra MBA CET 2026. And to my surprise and to your surprise, this year CET is going to be conducted twice. Not once, but twice. This is the first time that CET is going to be conducted twice in 1 year. So let's call it CET 1 and CET 2. So CET 1, which is the April CET, the dates given are 6th of April to 8th of April. So they have dedicated 3 days for CET number 1 or the April CET. And the second CET, which will be conducted in the month of May, the date given is 9th of May, which is just 1 day for the CET number 2. Now, I have some thoughts about this particular notification with respect to the date of CET. Let me share that with you. Number one, see, from a student's perspective, you might feel that this is a positive move because you're getting more opportunities, more chances in 1 year. नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी एक बार एग्जाम खराब जाए तो अगली बार वो मौका आपको अगले साल मिलता है, बट यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट फ्यू डेज डाउन द लाइन. एक महीने के गैप में you'll be able to write it twice. But though this move appears to be positive at a superficial level, but let me tell you that it is going to impact the cutoffs negatively. ऐसा क्यों? बिकॉज सीईटी 2 बार होने वाली है एंड सीईटी स्लॉट्स में कंडक्ट होती है, राइट? लास्ट ईयर देयर वर 6 स्लॉट्स, last year there were 5 slots. Since they have dedicated 3 days for CET number 1, कम से कम यहाँ पे तो 6 स्लॉट्स होंगे. यहाँ पे अगर सीईटी एक दिन भी होती है, विच इटसेल्फ आई एम फाइंडिंग इट वेरी डूबियस, बट लेट्स अज्यूम अगर एक दिन ये सीईटी होती, यहाँ पे भी कम से कम 2 स्लॉट्स होंगे. So there are going to be more number of slots. More number of slots means more number of toppers. In MBA CET, they have clearly mentioned on their website how the percentiles are calculated, and it is always slot wise. So होता क्या है, for example, let's say I'm going to write my exam in slot number 1, and let's say I'm the topper of that slot, so I'll get 100 percentile. Let's say you are writing in slot number 2 and you get 100 percentile there because you are the topper. You have got the maximum score out of all the students in that particular slot. So now we both are 100 percentilers. So basically, the number of percentilers at a particular percentile point, that depends on the number of slots, right? So मैं भी 100 percentiler, आप भी 100 percentiler. In the final merit, we both will get a score of 100 percentile. Now, since there are going to be more slots, there will be more number of 100 percentilers, there will be more number of 99.98 percentilers, there will be more number of 99.95 percentilers, there will be more number of 99 percentilers, 95 percentilers, 90 percentilers, which means at every percentile point, there will be more number of people for that particular point. What does it tell you? The cutoffs are going to go up. So this is not a favorable situation when I think from the perspective of cutoffs for a particular college. Cutoffs are going to be high, or rather higher than usual. Another point to notice here is, if they have decided to dedicate 3 days for CET number 1, how in the world they are going to manage all the retakers, which is CET 2 takers, in just 1 day? It does not make any sense at all. Because I'm assuming अगर आप फर्स्ट सीटी और सेकेंड सीटी दोनों देने वाले हो, एंड इफ दे अलाउ यू टू डू दैट, और आई एम अज्यूमिंग 80 to 90% ओवरलैपिंग होगी, एज इन सीटी 1 अगर 100 लोग दे रहे हैं तो 80-90 उसमें से सीटी 2 भी देंगे, एंड आइडियली अ सीरियस स्टूडेंट मस्ट बी डूइंग दैट. सो वो 80-90% हाउ आर दे गोइंग टू अकोमोडेट इन 1 डे? दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल. इट्स ऑल्सो नॉट क्लियर वॉट इज गोइंग टू बी अलाउड, एज इन क्या वो CET 1 को मैंडेटरी करेंगे एंड CET 2 को ऑप्शनल करेंगे, या फिर पूरी फ्रीडम आपके पास होगी कि यू कैन आइदर राइट 1 CET और 2 CETs. Even that is not clear. So a lot of things need to be disclosed, and we'll have to play a wait and watch game. But as of now, all you know is the tentative dates. We can think of all permutation combinations on these dates, and
the way they have presented these dates, but it's not going to be of any help to you because it's an uncontrollable. जो भी होगा वो सबके लिए होगा, वो future में आपको पता चल जाएगा. But for now, what is important is you know the dates and you can keep in your mind that the CET is on 6th of April. And you can start your planning, your preparation. You can put this fixture 6th of April and you can plan accordingly. Because बिना किसी fixed point के you cannot plan. So as a serious student, you don't worry about all these things. ये जब disclose होना होगा, सबके लिए same date पे disclose होगा, you'll get to know. Okay, so do not worry too much about this. You worry about 6th of April. एक बार goal set हो जाता है ना, तो planning करना आपके लिए आसान हो जाता है. So this is about the date part, which I wanted to communicate. Now the pattern. Pattern is the standard pattern. You will have 4 sections: logical reasoning, 75 questions; abstract reasoning, 25 questions; quantitative aptitude, 50 questions; VARC, verbal ability and reading comprehension, 50 questions. So total you will have 200 questions to be solved in 150 minutes, which makes the time per question to be 45 seconds per question. There'll be 5 options per question and there won't be any negative marking in the exam. So this is the standard pattern of Maharashtra MBA CET. Now, on the face of it, the paper looks easy. On the face of it, this is the pattern, right? This has always been the pattern. But is it really the pattern? So, CET, the conduct of this examination, I particularly am not a fan of the conduct of this examination. The way it is conducted, the way notifications are rolled out, the way something is given on the website and suddenly they change it. बहुत बार हुआ है कि they will say that something is going to happen on a particular date and that something will either happen before or after. So बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है CET के साथ और हुई है past में, which I'm not a fan of. There's always been some kind of controversy associated with Maharashtra MBA CET. We will talk about it in this video and it's important you understand the CET story. I'm going to present that story to you so that you can take the insights from the story and use it to plan CET 26 in a better way. Okay. So, is CET really easy? We are going to answer that in some time. Now, the process, very simple. You write your exam, you get your score, you get your merit ranks, then you shortlist your colleges according to the merit ranks. You participate in the cap rounds. Either you take the allotted college or you go for a betterment in the subsequent rounds. There is no GDPAE for MMS or MBA programs. So this is the typical process that every student who gives CET follows. This is why you are writing this exam. The top college is JBIMS. Second in rank would be Sydenham. Third in rank would be Wellinger. Fourth, there's a bracket, Pumba, COAP, SIES. Fifth, again I've kept a bracket here, Xavier's, Chetna, MAT. And sixth, Indira Thakur. So ideally you should be fighting for the top 3. See, ideally you should be fighting for the best, which is JBIMS. But again, I'm no one to comment on your ambition. So any serious student should be looking at 1, 2, 3. If not 1, then 2. If not 2, then 3. Right? These can be your backup options. 4 and 5 can be your backup options. 6 onwards, it becomes avoidable category. As in they are decent. I'm not saying they are bad. But will I be resting my career on these colleges? No, I won't. Because this is an important decision. The college that I'm going to get into will shape my future career. Right? So this is what you're fighting for. JBIMS and Sydenham are they are 2 of India's best colleges in terms of return over investment, right? JBIMS is one of the best colleges in the country for pursuing an MBA. So you should be targeting JBIMS or Sydenham. And you need a very, very high percentile to get into JBIMS or Sydenham. For JBIMS, it's usually in the territory of 99.9697, this territory, in the vicinity of that. Sydenham would be 99.8x, somewhere in this territory.
Again, there are a lot of reservations and lot of categorizations. We won't get into that. But for now, this is what you're fighting for. So we have established, we have understood the process, we have understood the standard pattern, and we know what we are fighting for. Why are we taking this exam? Now let's understand the competition. So this is the number of takers for past few CET years. You can see the numbers for yourself. So last year, 1.38 lakh people took Maharashtra MBA CET. And this is number of takers, not number of people who have filled the form. Usually there is a 10 to 15% drop from the number of people who fill the form to the number of people who take the exam. So this year you can expect the number to be in the vicinity of this number. So from 1.3 to 1.5 lakh people, they are going to take this year's Maharashtra MBA CET. If you see this table, 16 to 17, more number of people, 17 to 18, more number of people, 18 to 19, more number of people, 19 to 20, more number of people, 20 to 21, more number of people, 21 to 22, less number of people, 22 to 23, less number of people, 23 to 24, more number of people. But see, the growth is not very promising here. But from 24 to 25, there is growth here. So I'm expecting around 1.5 lakh people to write MBA CET. Now, types of CET aspirants, in my eyes, there are only 4 types of students who are going to write this exam. The first type is OMET takers. So OMET stands for Other Management Entrance Test. Typically, it's a term used for non-CAT exams. So let's say you are someone who is planning to write NMAT, SNAP, CMAT, CET. And this is in your pipeline. This is in your plan. To write MBA CET is in your plan. It's going to be the last exam for you. So this is the first category. आपने डिसाइड किया है कि आप NMAT, SNAP, CMAT, CET दोगे या इनमें से कुछ एग्जाम्स दोगे. You write at least one of NMAT, SNAP, CMAT, CET और CET आपकी लास्ट में होने वाली है. You belong to this first category. Second category is late to the party. These are the students who only write Maharashtra MBA CET because they realize it very late. So you are a student who is in the last year of your graduation and जब आपने decide किया कि आपको MBA करना है, उस point पे सारी exams खत्म हो चुकी थी, उनके deadlines खत्म हो चुके थे and only one exam was left which was Maharashtra MBA CET. So that is what I mean by late to the party. ऐसे बहुत students होते हैं. The third category is all exam takers. So these are students who have planned really well. They are going to take every exam which is going to come their way, starting with CAT, then NMAT, SNAP, ZAT, CMAT, CET. Every exam which comes their way, they take the exam. So उनके भी pipeline में CET आने वाली है. And the last category is the afraid of cons category. So many people, they write MBA CET because there is this perception that CET में उतना cons नहीं पूछा जाता, which is true because cons is only 25% of the paper. And उसमें भी अगर आप arithmetic अच्छे से कर लो तो उस 25% का 50% ऐसे ही 50-60% ऐसे ही हो जाता है. So you don't have to go for depth in various areas of cons. एक area पे अगर arithmetic पे command है तो you are good to go. But there are students who feel that कि बाकी के एग्जाम में कौन ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. स्पेसिफिकली ऐसे लोग होते हैं जो कौन से डरते हैं, मैथ से डरते हैं, तो वो डर की वजह से दे रिजेक्ट ऑल दी अदर एग्जामिनेशन एंड दे कीप सीईटी एज देयर प्राइमरी टारगेट. टिपिकली दीज आर दी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, दे आर महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड एंड उनको कैट से डर लगता है या जैट से डर लगता है या एनमैट से डर लगता है, इसीलिए उन्होंने एक ईजी अपियरिंग एग्जाम विच इज़ महाराष्ट्र MBA CET उसको टारगेट बना के रखा है. दिस इज द फोर्थ कैटेगरी. सो इसमें से ये जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है, दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट ओनली वन एग्जाम विच इज CET, प्रोबेबली वन मोर एग्जाम CMAT. तो या तो CET देते हैं या CMAT CET देते हैं ये सेकेंड और फोर्थ कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स. एंड 1 and 3 दे एक्चुअली हैड अ प्लान इन प्लेस कि मुझे इतनी एग्जाम्स देनी है और उसमें CET आने वाली है लास्ट में. सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ CET एस्पिरेंट्स. आप डिसाइड कर लो आप किस कैटेगरी में हो. किसी कैटेगरी में होना या ना होना इसका कुछ यहाँ पे इस डिस्कशन में कोई इम्प्लीकेशन नहीं है.
ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट या थर्ड कैटेगरी में हो, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर सीईटी बिकॉज आपकी 60-70% चीज़ें ऑलरेडी सॉर्टेड होती है बिकॉज यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड अदर एग्जाम्स. सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी इन प्लेस होती है. तो सीईटी के लिए कुछ डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, बट उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितना सेकेंड या थर्ड फोर्थ कैटेगरी वालों को करनी पड़ेगी बिकॉज दीज आर दी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट ओनली वन एग्जाम एंड दैट इज सीईटी. ओके, आई एम नेवर अ फैन ऑफ relying on just one exam. You ideally, as a serious and ambitious student, as a smart student, you should be hedging your risk. See, when you write an exam, there is a risk involved, right? As in, अगर उस एग्जाम में आपका डिजायरेबल स्कोर नहीं आया, आपका वो ईयर वेस्ट हो गया. So you need to hedge your risk. The way you hedge the risk is by taking multiple exams. इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा, इसमें नहीं हुआ तो उसमें होगा. And every exam makes you better prepared for the next exam. That is what I sincerely believe in. So I believe in the funda of targeting the entire season and not just one exam. But nonetheless, अभी उस पर नहीं जाते, अभी सिर्फ ये बात करते हैं कि these are the 4 types of CT aspirants and you can point to yourself and tell yourself which category you belong to. Be honest about it. Okay? So आपका competition है 1.5 लाख लोग, उसमें अगर आप top 20, 30, 40 में आते हो तो you have a chance to get into JBIMS. Which is a very good college in terms of return over investment. It's a very good college overall, but it's known for its return over investment. कम फीस में काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं. अभी तो फीस कुछ बढ़ा दी है उन्होंने, बट पहले तो काफ़ी ही कम फीस होती थी. FMS के बाद JBIMS ही कहा जाता है ROI के सेंस में. Anyways, let's talk about the MBA CET story. This will help you to extrapolate CET 26 इन अ बेटर वे. आपको समझ में आ पाएगा कि CET 26 से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग इटसेल्फ दैट आई एम नॉट अ फैन ऑफ द वे इन विच द entire process is conducted, starting from when they start to release the notifications from the admit cards to the exam, then post exam. I'm not a fan of the entire process. उसमें बहुत सारे लूप होल्स है एंड हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रही है सीईटी के साथ. सो लेट मी प्रेजेंट टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी सो दैट यू ऑल्सो कैन प्रोजेक्ट CET 26 in a better way and you have a real picture about this exam, right? So I'm going to disclose the harsh reality of this CET as an exam, and also I want to comment on the conduct of the exam. So I have been tracking Maharashtra MBA CET since 2010. Okay, तो 2010 and before, 2010 and before, जितनी भी CET एग्जाम्स हुई थी वो सारी पेपर बेस्ड थी. These were paper based CETs. We'll call it PBT, paper based tests. Okay, all these CETs, they were easy and the cutoffs were super high. Because पेपर आसान था तो लोगों का एक इंप्रेशन बन चुका था कि सीईटी में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो यू कैन नॉक इट ऑफ इन 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, सम कैन बी नॉक्ड ऑफ इवन इन 10 सेकेंड्स. तो एक इंप्रेशन बन गया था सीईटी का पेपर का कि हाँ एक आसान एग्जाम है. एंड इवन द पेपर फॉर्मेट टेल्स यू द सेम पिक्चर दैट 200 क्वेश्चन 150 मिनट में, सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू नॉक इट ऑफ इन 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स. जैसे हमने कहा था, टाइम पर क्वेश्चन इज ओनली 45 सेकेंड्स. बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको 1 या 1.5 मिनट लगेंगे पर क्वेश्चन. दिस इज द इंप्रेशन सेट बाय द फॉर्मेट ऑफ द पेपर एंड इट वाज एविडेंट इन 2010 एंड बिफोर ऑल दी सीईटीज. तो हमेशा पेपर आसान ही रहा था और कट ऑफ्स हमेशा ऊपर रहते थे. JBIMS में जाने के लिए 170, 175, 178 ऐसे कट ऑफ्स होते थे. 2011 it broke the trend. It broke the trend of easy CETs resulting in super high cutoffs. 2011 में पेपर आ गया मॉडरेट. ये भी पेपर बेस्ड टेस्ट था
और बिकॉज इट बीइंग अ मॉडरेट पेपर, कट ऑफ्स वेंट डाउन, दे वेंट डाउन ड्रास्टिकली. मतलब जो JBIMS में जाने के लिए 170 एंड अपवर्ड्स लगता था, इस दिस ईयर इफ आई रिमेंबर वेल 135 के विसिनिटी में आपको JBIMS मिलना शुरू हो गया था. सो स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी फॉर दिस CET बिकॉज जो हिस्ट्री थी वो ये कह रही थी कि पेपर विल बी इजी, सुपर हाई कट ऑफ्स, इजी क्वेश्चंस, स्पीड ओरिएंटेड पेपर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन छोड़ो. दे वर नॉट रेडी फॉर दिस, राइट. नाउ 2012 की CET ये भी एक पेपर बेस्ड टेस्ट थी. अब बताओ, इफ यू आर अ स्टूडेंट who is going to take this CET and you have seen the history of CET, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे? अगर मैं ये CET दे रहा होता तो मेरे दिमाग में प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये थॉट्स आते कि हो सकता है CET ने यहाँ पे जो चेंज लाया है, इट्स अ वन ऑफ चेंज. I will rather rely on the previous CETs because that was the legacy of CET. That is what the CET was known for. और इस साल जब ऐसा किया तो उनको वो काफ़ी गालियाँ पड़ी कि आपने सडनली पैटर्न ऐसा चेंज कर दिया. सो एज अ स्टूडेंट मुझे लगेगा कि ये वन ऑफ चेंज हो सकता है, CET विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड पैटर्न. बट दिमाग में ये भी थॉट आता है कि अगर लास्ट ईयर ऐसा था, व्हाट इफ दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा ऑफ CETs, राइट. So as a serious student, I should have been ready for both the scenarios. But as a regular student who does not bother too much about these things, उसको तो यही लगेगा कि ये one off change था, it will go back to its roots. 2012 में this was similar to 2011. It was a moderate CET. And cutoffs were similar to CET 2011. Similar to CET 2011. Not the same, but similar. Okay. So 2011, 22, 2012, ये दो CET, moderate CETs, cutoffs went drastically down when you compare it to the 2010 or pre-2010 era of CETs. Now 2013 पे जो बच्चा CET देने का प्लान कर रहा था, वो क्या सोचेगा? अभी 2 साल ये हो चुका है तो अभी वैसा ही होगा. So they were now mentally ready for this moderate CET. इस साल क्या हुआ? CET ही नहीं हुई. There was no CET. This is the year when CMAT was introduced. CMAT was introduced in 2013. Okay. और मैं आपको बताता हूँ CMAT क्यों introduce किया गया था. CMAT was introduced with the notion that this will replace all other exams in the country. One nation, one exam. That was the motto behind CMAT. And CMAT was a CBT, computer based test, जहाँ पे आपको किसी सेंटर पे जाके एक कंप्यूटर लैब पे कंप्यूटर दिया जाएगा, उस पे आपको एग्जाम दोगे. Now this CMAT turned out to be a failure. Okay, it did not turn out to be a success. It aimed to become one exam for the nation. It eventually became one other exam. So अभी as of today CMAT क्या है? एक और एग्जाम है. It is not the only exam in the country, right? In fact, it's one of the inferior exams in the country. अगर आप कंपेयर करो सारी एग्जाम्स को, it's one of the inferior exams in the country. So इस साल all these colleges that I mentioned, and there were many more colleges also. अभी कुछ colleges वो CET process से बाहर हो चुके. KJ Somaiya is out, Dalmia is out. So पहले वो सारे colleges उस लिस्ट में थे. Apart from what I mentioned, इस साल CET नहीं ले रहे थे, वो CMAT के थ्रू एडमिशंस करा रहे थे. एंड CMAT turned out to be a big failure because it was happening for the first time. And there were too many issues with the exam. सेंटर्स में कुछ इशू हो रहे थे, पेपर लीक्स हो रहे थे, बहुत से प्रॉब्लम्स हुए थे. बट CMAT का जो फेलियर था वो ऐसे प्रोजेक्ट कराया गया, इट वॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. एज इन बहुत सारे कंप्यूटर लैब्स नहीं थे, इसलिए CMAT टर्न आउट टू बी फेलियर, ये रीजन दिया गया था. सो 2014 में citing that reason, CMAT was scrapped and CET came back into the picture. Okay, CET came back into the picture. Now आप सोचो, अगर आप ये रीजन दे रहे हो कि CMAT is a failure because it's a computer based test and बहुत सारे कंप्यूटर्स नहीं थे,
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? सीईटी कैसी होगी? इट विल गो बैक टू इट्स पेपर बेस्ड पार्ट, because that was the reason mentioned कि computer based exam is not a success. So if it's not a success, if I'm coming back to the picture, it will be a paper based exam. But guess what happened? CET became computer based this year. So this is the first year when CET came as a computer based exam. Such an irony, right? जिस बारे में कंप्लेन हो रही थी वही चीज आप कर रहे हो. Now see the situation of this student. वो क्या सोचेगा इस साल क्या होने वाला है? बिकॉज लास्ट ईयर तो हुआ ही नहीं सीईटी, सीमैट हुआ, सीमैट में जीके पढ़ना पड़ा था उनको, राइट, जो कि सीईटी में नहीं पढ़ना था कभी भी. तो अब ये क्या सोचेगा सीईटी कैसी होगी, 2011-12 जैसी या 2010 या उसके पहली. सो अगेन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हियर आल्सो फॉर स्टूडेंट्स. सो 2014 में जो सीईटी हुई वो काइंड ऑफ अ मॉडरेट सीईटी, नॉट एज डिफिकल्ट एज 2011 but not as easy as 2010. So it was somewhere in the middle. Okay, 2014 में CET हुई, कट ऑफ्स मॉडरेट लेवल पे थे, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, बीच में. ठीक है, अब 2015, अभी 2015 वाला स्टूडेंट क्या सोचेगा कि हाँ 11, 12, 13 में तो हुई नहीं, 14 में भी मॉडरेट. सो एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया यहाँ पे कि 11, 12, 14 moderate CETs हो रही है, so it is going to be a moderate CET. But this year the CET was the weirdest CET. It was a nonsense CET. मैं बताता हूँ क्या हुआ था इस साल. पहली बात, CET के पेपर में there were GK questions. CET के पेपर में there were some unrelated questions which were neither logical reasoning nor quantitative aptitude nor English nor abstract reasoning. पहले abstract reasoning को the name was visual reasoning. It was a weird CET and paper किसी को RC जो reading comprehension passage है वो एक लाइन में दिख रहा है. मतलब normally passages they are like this, right? वो ऐसे उन्होंने पैसेज को लिखा था. सो इमेजिन हाउ डिफिकल्ट टू रीड अ पैसेज विच इज गिवन लाइक दिस. स्क्रॉल बार आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है. वैसे बहुत सारे इश्यूज हुए थे CET 2015 में, एंड अक्रॉस स्लॉट्स देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी. सो यहाँ पे लक फैक्टर काफ़ी आ चुका था कि अगर आप सही स्लॉट में हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टू गेट इनटू JBIMS. ऐसा 2015 में बहुत हुआ था. देयर वर टू मेनी कंट्रोवर्सीज इन 2015. इट वाज अ वियर्ड पेपर. कुछ भी उन्होंने फॉलो नहीं किया पेपर पैटर्न, कुछ भी पूछ रहे थे. वेरी वियर्ड पेपर. 2016, 2017, 2016, 2017 difficult CETs. 2017 was one of the most difficult CETs. यहाँ पे कट ऑफ्स कम हुए. ओके, मतलब अब ध्यान से देखो तो 2010 के पहले आसान CET थी और 11 के बाद अगर आप 15 का एक्सेप्शन लेके रखो तो सारी CETs मॉडरेट या डिफिकल्ट साइड पे थी. व्हेन आई से मॉडरेट और डिफिकल्ट CET, आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ द कट ऑफ्स. अगर कट ऑफ्स गिर गए मतलब डिफिकल्ट CET है, कट ऑफ्स अगर बहुत हाई है मतलब आसान CET है. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द फील ऑफ द पेपर. ओके, 2018, 2019 ये सारी आपकी मॉडरेट CETs थी. 2020 ये कोविड अफेक्टेड CET थी. इस CET में भी बहुत इशू हुए. नोटिफिकेशन में कुछ कहा, हुआ कुछ. there were lot of discrepancies even in this CET. 2021 another nonsense CET. ये ऐसी CET थी जहाँ पे they had questions on differentiation, integration, functions, limits, differential equations, matrices, determinants. अब सोचो, अभी थोड़ी देर पहले आई हैव गिवन यू दोस 4 कैटेगरीज ऑफ CET एस्पिरेंट्स, राइट. एक कैटेगरी उसमें थी कि लोग CET देते हैं बिकॉज उनको कौन से डर लगता है, उनको लगता है कि CET आसान एग्जाम है जहाँ पे ज़्यादा मैथ नहीं पढ़नी है. तो बहुत लोग उस
पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम भरते हैं, का फॉर्म भरते हैं, एंड सोचो ऑलरेडी उनको मैथ से डर लग रहा है, उनके सीटी पेपर में जिसके सिलेबस में इन टॉपिक्स का नामो निशान तक नहीं है, दे गेट टू सी दीज क्वेश्चंस, तो वो डर गए पेपर से। एंड आइडियली सीटी के पेपर में आना ही नहीं चाहिए, राइट? सो अगेन अनदर नॉनसेंस सीईटी 2021। okay, 2022 this paper had jumbled questions, as in there were no defined sections. Also, in this paper, even though you had the jumbled paper, they did not follow the number of questions for a particular section. Even though there were no sections, but ये कम से कम अज्यूम किया जा रहा था कि LR में अगर जम्बल्ड ही सही बट 75 क्वेश्चंस हो, यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं किया गया. Some slots had more number of questions in LR, some slots had less number of questions in LR, and the discrepancy or the disparity was too big. किसी एक स्लॉट में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सिंगल डिजिट क्वेश्चंस थे, एज अ सिंगल डिजिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड किसी एक स्लॉट में बहुत क्वेश्चंस थे. वी विल गेट टू दैट स्लाइड जहाँ पे वो एग्जैक्ट नंबर्स भी आपको पता चलेंगे. सो अगेन यू हैड जंबल क्वेश्चंस एंड देयर वाज नो स्ट्रक्चर टू द पेपर. फिर CET 2023, this again was a jumbled paper, but the only good news here was that they did not default on the number of questions for a particular section, even though there were no defined sections, but at least LR के 75 ही थे, Quants के 50 ही थे, that was maintained. And the other good news was questions of one type were together, right? So that was not present in 2022. There were jumbled questions and the jumbling was very weird, as in if there is an RC set, तो उस RC set के लिए से 5 क्वेश्चंस है, तो 2 क्वेश्चन अभी आएंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन कुछ समय के बाद आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के बाद आएंगे. तो दैट वाज अ वेरी वियर्ड जम्बलिंग दैट वाज डन. यहाँ पे एक अच्छी बात थी 2023 में, that the jumbling was done in a manner that was comfortable for students, as in if an RC was there, all the questions for that RC were together, they were not coming in phases. तो ये 2023 के साथ हुआ. फिर 2024 last to last year, CET came back to the standard pattern. When I say the standard pattern, as in defined sections were there, LR 75, verbal VRC 50, abstract reasoning 25, Quants 50, that was there, defined था. लोगों को पता था कि LR section है, उसमें ये questions है, ये abstract reasoning की ये questions है, and so on. So it came back to the standard pattern, but again slot-wise discrepancy was there. There was a particular slot, if I remember well, slot number 4. Let me check. Yes, slot 4. Slot 4 had questions which were comparable to CAT and XAT, difficult quant questions. मैं CAT XAT के normal questions की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ CAT and XAT के difficult quant questions, lengthy quant questions, वैसे questions उस एक slot में थे. तो कुछ slots बहुत ही आसान थे. For example, slot 1, अगर आप slot 1 में थे तो again let me confirm. Slot 1, yes. Slot 1 was a very easy slot, one of the easier CET papers. And slot 4, one of the most difficult CET papers because there were questions which ideally should not be in a CET paper. हाँ, बड़ी एक अच्छी बात थी, कम से कम ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं था कुछ, राइट? If there is a difficult quadratic equation question, but quadratic equation is a part of the syllabus, at least syllabus का तो part था. So that was the scenario for 2024. And coming to the last year's CET paper 2025, it was a standard pattern. Here also there were some slot discrepancies, but majorly all slots were comparable. There was a particular slot जहाँ पे गड़बड़ थी. Let's talk about 2025 CET paper. So this is the marks versus percentile table for 2025 paper for all the slots. So if you carefully observe, look at slot number 2. To get a 90 percentile, you needed 70 marks. But
In slot 1 to get a 90 percentile, you need 102 marks. See the disparity? Almost 50% more marks you wanted in slot 1 to get the same percentile. What does it tell you about the slot? The slot was very easy, but that was not in your favor, because अगर यहाँ पे आप लेट्स से इवन 80 भी स्कोर करते जो कि इससे ज्यादा होता, आपका परसेंटाइल कम होता, राइट? 80 अगर स्कोर करते तो आपका परसेंटाइल 70 और 80 के बीच में यहाँ पे कुछ आता. एंड this particular 2025 paper, slot 2 was the most difficult slot. Other slots were almost comparable, but again it was not uniform. See, अगर आप multiple slots में exam conduct करा रहे हो, that's okay, but at least keep the level playing ground, right? The slots should be comparable. But वैसा यहाँ पे भी नहीं था. So if you see this MBA CET story, it's a Humpty Dumpty ride, right? And it takes every student who tries the exam on a roller coaster experience, because कुछ ना कुछ तो होना ही है, right? So why did I tell you this story? I wanted to share this story with you, and I wanted to share the hiccups which happened in all these CET, so that you understand that anything can happen in CET 2026 and you should be ready for anything and everything. Do not treat the paper as an easy paper, because आपको नहीं पता आप किस स्लॉट पे जाओगे, आपके कंट्रोल में है ही नहीं वो. ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी फॉर्म भरने से कोई पर्टिकुलर स्लॉट मिल जाएगा. हो सकता है जल्दी फॉर्म भरने से वो स्लॉट मिले जो सबसे डिफिकल्ट स्लॉट हो, एंड हो सकता है उस डिफिकल्ट स्लॉट में या तो बहुत बुरा परफॉर्म करो, और या तो एवरेज परफॉर्म करने पे भी आपके परसेंटाइल नॉर्मल किसी और अदर स्लॉट से बेटर हो जाए. सो एनीथिंग कैन हैपन. इट्स नॉट अ प्रेडिक्टेबल पेपर. हो सकता है आपके स्लॉट में डिफिकल्ट हो क्वांट के क्वेश्चंस, आपके स्लॉट में पजल्स लेंदी हो, आपके स्लॉट में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस ज्यादा हो, और किसी और स्लॉट में वोकैब शायद बहुत कम हो, ग्रामर ज्यादा हो, आरसी बहुत ज्यादा हो. there can be a lot of fluctuation here and you should be ready for it. आपके लिए बहुत सिंपल है. आप अपने स्लॉट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, दैट्स योर गोल. आप अपने स्लॉट में हायर परसेंटाइल लाने की कोशिश करो, and that is what you should be doing. But that can only happen if your preparation is very solid. You do not prepare for CT with the perception that it's an easy paper, because if you go with that perception, you will be skipping a lot of topics. आपको थोड़ी डेप्थ लगने वाली है CT के लिए भी. This is what makes the 4 categories I talked about, right? उसमें से जो 2 categories थी, category 1 and category 3, आपको याद होगा, we spoke about these 4 categories. So category 1, category 3, they are better prepared for a CET exam than category 2, category 4, because category 2, category 4 तो ये माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि पेपर आसान है, पेपर में ये सेक्शन आसान होगा, पेपर में सिर्फ स्पीड लगती है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस नॉक ऑफ होंगे. पर उनको ये पता ही नहीं है कि स्लॉट वाइज डिस्क्रिपेंसी होती है, परसेंटाइल्स भी इफेक्ट होते हैं. ये सारी चीजें आपको समझनी काफी जरूरी है, बिकॉज दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम, राइट? सो योर प्रिपरेशन शुड बी वेरी होलसम. इट शुड बी कवरिंग द बैंडविड्थ. You should cover every topic that can be tested. It could be a possibility that the particular topic that you prepared for did not come in a particular slot. But आप ये सोच के जाओ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, because then only you are ready for every possibility in the exam. Right? So I hope this story paints a very clear picture, the reality of this exam, that you should be ready for anything and everything, and your preparation should cater to that. Right? It's unpredictable. Though on the face of the notification it looks very predictable, because the standard pattern is always copy pasted there, that LR will be of 75 marks and AR will be of 25 marks and cons and verbal ability RC will be of 50 marks each. That is always copy pasted into the notification. तो एक नए स्टूडेंट को हमेशा भरोसा रहेगा ना इन नोटिफिकेशंस के ऊपर, तो वो देखेगा, बोलेगा लिखा है तो ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं होता. आप देख रहे हो, एनीथिंग कैन हैपन इन द पेपर. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. So CET is not easy, CET is not predictable. It's a test of managing this, and you have to get onboarded with this challenge, and your preparation should cater to that. I hope I'm making my point very clear, that please be ready for anything and everything. Do not underestimate the paper. Understanding some of the past CETs. Here you have the year number, and I've taken 3 important checkpoints. 100 मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा, 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए,
और 99.99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपके सामने है। सो इफ़ यू सी 2016 to 2021 paper, you can compare their difficulty levels based on these checkpoints. जैसा कि अगर आप देखो तो 2017 में 99 परसेंटाइल के लिए आपको चाहिए थे 107 मार्क्स, और अगर आप बाकी ये ईयर्स देखो 120, 118, 123, 120, 119, सो ये देखो तो ये सारे कंपेरेबल है. All these are in the vicinity of 120, right? But this 2017 paper, to score a 99 percentile, you needed 107 marks. अगर कम मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रहा है, मतलब द पेपर इज अ डिफिकल्ट पेपर कंपैरेटिवली, राइट? सो दिस टेल्स यू दैट. एंड इफ यू सी 2024 पेपर, 100 मार्क्स पे 88 से लेके 99.xx परसेंटाइल तक लोगों को आया, बिकॉज ऑफ दैट diversity between the slots, the disparity between the slots. And see 2025 100 marks पे 90 से लेके 99 परसेंटाइल आया, right? But 2025 में ऐसा एक ही slot था, which is a positive news or good news for you. Hopefully this year they stabilize, they give you slots which are uniform throughout. But इस साल पहले से ही एक change है कि CET 2 बार होने वाली है, so you have to be ready for anything and everything. And as I've told you, if it really happens that ki 2 बार होती है and then give you the choice to appear for both the CETs and then they will consider the best score out of the 2 attempts, then the cutoffs will be going up. In that case, it becomes more important that your preparation is very solid and it takes care of every possibility. Okay. Now so this is a table which I had shown you earlier. I'll just move out of the frame so that you can see the numbers for yourself. You can probably pause and draw your own insights out of this table. This will help you to understand Maharashtra MBA CET 2025 better. I hope you realized from this table that slot number 2 was the most difficult slot. See the numbers for a particular percentile point. 100 marks पे 99 percentile आया यहाँ पे, but वही 100 marks पे slot 1 पे 131 आया, स्लॉट 1 में 131 पे 99 परसेंटाइल, स्लॉट 3 पे 140 पे 99 परसेंटाइल, स्लॉट 4 पे 135 पे 99 परसेंटाइल, स्लॉट 5 and 6 136 137 पे 99 परसेंटाइल. So this tells you that which slot is difficult, right? And same I have here for CET 2024. Again, you can pause if you want to draw some insights out of the table. Now I'll quickly share some noteworthy points about the last CET, that is CET 2025. Again, to paint the picture that CET is unpredictable and it is not as easy. This is the order of difficult. Slot 2 was the most difficult, followed by slot 1, followed by slot 6, followed by slot 4, followed by slot 5, and last slot 3. But slot 1 to slot 3 were pretty much comparable. Slot 2 was kind of an anomaly. It was an outlier. वो कुछ ज़्यादा ही difficult था compared to the other slots. Composition within a slot for a section was different. As in, जो 75 क्वेश्चंस LR के हैं या जो 50 क्वेश्चंस VARC के, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो हर स्लॉट में अलग अलग था. दैट अगेन विल बी शोन इन अ फोर्थकमिंग स्लाइड. हाँ, यहाँ पे एक सरप्राइज ये था कि LR सेक्शन के अंदर कुछ कुछ स्लॉट्स में अप टू 20 क्वांट क्वेश्चंस थे. LR, सी देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन LR एंड क्वांट्स, राइट? बट यहाँ पे LR के अंदर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे एंड अप टू 20. मतलब 75 में से 20 क्वेश्चंस क्वांट्स के थे जिसको टैग किया गया था LR. कुछ स्लॉट्स में CR क्वेश्चंस थे ही नहीं, कुछ स्लॉट में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, कुछ स्लॉट्स में RCs थे एक क्वेश्चन वाले. देयर वाज एन RC एंड देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन ऑन इट. ऐसे कुछ स्लॉट्स थे. फुल गैमट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाज टेस्टेड. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग in 2025 it went back to the older CETs, as in पूरा बैंडविड्थ टेस्ट किया गया है. सीरीज क्वेश्चंस, ऑड मैन आउट, सिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर, काउंटिंग डायग्राम्स, फॉर्मिंग डायग्राम्स, एम्बेडेड डायग्राम्स, डाइसेस, वेन डायग्राम्स, ये सारा सब कुछ टेस्ट किया गया था. तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग काफ़ी डाइवर्स फॉर्म में आया था. ऑन द कॉन्ट्ररी पहले के जो CETs थे, मतलब मैंने इसे पहले के CETs एज इन 2023 एंड pre 2023 period
वहाँ के जो CETs थे, दे हैड ओनली 3 टाइप्स ऑफ सीरीज क्वेश्चंस, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस. सीरीज होती थी, या तो ऑड मैन आउट होता था, या तो सिमिलर डिसिमिलर पेयर होता था. ये तीन ही टाइप्स डोमिनेट करते थे, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ था. 2024 में भी वैसा नहीं हुआ था. See, slot 1 had 9 RCs, slot 2 had 5 RCs, slot 3 had 4 RCs. So see the disparity. Some slots had data sufficiency even in LR, which is okay, it's expected, but some slots में था, कुछ में नहीं था. That's the disparity here. A slot had no data interpretation, while some others had data interpretation questions. सोचो, data interpretation था ही नहीं, which is a major part of CET quants. था ही नहीं किसी slots में. Again, same picture, CET is unpredictable. Slot 1 had just 2 grammar and 20 vocab based questions. See vocabulary weightage here. 20 is too much. 40% weightage in VARC vocabulary. Slot 1. But see, slot 2 had only 8 grammar questions and 12 vocabulary questions. तो यहाँ पे grammar का weightage बढ़ गया, vocab का weightage कम हो गया. Yes, one more thing. There were some quant questions, though the number was in single digits. There were 3 to 4 quant questions which were direct copy paste from CAT 2024 paper. Same as it is. CAT 2024 के quants में से 3-4 questions सीधा as it is उन्होंने paste कर दिया CET 2025 के एक slot में. Some slots had number series even in the QA section. तो LR में तो number series थी, quants में भी number series थी. ये कुछ noteworthy points है which should tell you the fluctuating nature of the CET within slots. Now this is topic wise breakup for CET 2025. Here I have written the data for slot 1, slot 2, slot 3. You can just go through the numbers. This is for CET 23 and 24. This is for CET 2022. This is for CET 18, 19 and 20. So that you understand the anatomy of the LR section across all these years. Here you have it for the quant, DI, DS, DC section. DI stands for data interpretation. DS stands for data sufficiency. DC stands for data comparison. This is for the VARC section. This is for the abstract reasoning questions, the section. See, in CET 2025, I have written rest for this others. The other category in abstract reasoning. When I say other category, the question types out of these 3 types, series, analogy, similar, dissimilar pair, they came in plenty. Now, this is how to score 99.9x in CET 2026. We are going to talk about it in depth in a dedicated video, but I'll just give you an overview. What all do you need for it? You need to start with diagnosis. So start with a diagnostic test. वो test क्या होना चाहिए, कितने होने चाहिए, we'll talk about it in a separate video. You need to show discipline. As I've shown you that it's a test of management, right? You need to juggle so many things which are not under your control. And that has to be managed with your preparation. Your preparation has to cater to that, right? So it can only be done if you do it with discipline. Your preparation should be super strong. It cannot be happy-go-lucky. It has to give you confidence. ऐसी preparation आपको करनी चाहिए. And your preparation should cover everything. The fundamentals, the concepts, the application of concepts, representative questions, practice, efficient approaches. Everything should be a part of your preparation. 25 to 30 mocks along with workout. By workout, I mean you need to take either topic tests or section tests or area tests in a time-bound environment. You should have a potent assessment plan in place. कितने mocks दोगे, कब दोगे, किस strategy के साथ दोगे, कितनी strategies लगाओगे, mock के बाद कितनी देर analysis करोगे, उस analysis में क्या करोगे, एक mock और दूसरे mock के बीच में क्या करोगे. That is what I mean by a potent assessment plan, which should be assisted with multiple test-taking strategies for you to experiment in mocks. Your analysis should take care of the fine-tuning aspect. Do not take mocks for the purpose of just taking them. You need to take mocks so that you fine-tune. Your performance should be fine-tuned after every mock.
and this entire process should be accompanied by right psychology, and it's very important in the current context. Again, we'll talk about these pointers in a dedicated video because I feel they demand more attention. So this video was all about CET that you need to know at this point in time, so that you are ready. You know which date is your CET paper, at least in your mind, so that you can start your planning and preparation, and you have a clear cut idea about the reality of CET papers. I've given you the MBA CET story. Now you know what has happened in which year, you know all the major points, so you can comment better on the upcoming CET 2026 paper. You can set clear expectations out of that paper, that I don't have to expect anything, I should be ready for anything and everything. I hope this video has been a value addition to your knowledge. Though we have not spoken much about any concepts or any ideas or any plans as such, but again, I felt that this needed to be the first video for CET 2026 series of videos, so that you have a clear cut picture and your expectations are very straight set up before you start anything in terms of preparation or planning.